Hello students, good morning everyone. Today we are going to discuss three main heading. First, point out dispersion. Dispersion forces. First heading will be dispersion forces and second heading will be thermal energy. Okay, and third heading will be thermal energy versus intermolecular forces. Okay, how to define dispersion forces and how to define thermal energy? What are the thermal energy? And the last one is thermal energy, how to correlate intermolecular forces. What are the effect of intermolecular forces due to thermal energy? Okay, so now first heading we will be discuss dispersion forces. Now point out first heading dispersion forces. Okay, dispersion forces was given by London. London is the name of scientist. Okay, London is the name of scientist which gives dispersion forces. Okay, now dispersion forces, one of the another name also called dispersion forces, London forces. Now some books mention London dispersion forces, but all are same concept. Okay, now how to define dispersion forces? According to London, forces arise in between first two neutral molecules. That is two non-polar molecules. These type of forces arise in between two non-polar molecules, two neutral molecules. One neutral molecules which interact to the another neutral molecules. Now these type of forces also arise
in between two neutral atom like inert gases, and third one is this type of forces also arise in between one of the neutral molecules and one of the neutral atom. Okay? Try to understand dispersion forces को ही दूसरे वर्ड में कहते हैं लंदन फोर्सेस, क्योंकि लंदन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु इज डिस्कवर्ड डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन ये साइंटिस्ट नेम है, इन्होंने ही डिस्पर्जन फोर्सेस को एक्सप्लेन किया है। और इस डिस्पर्जन फोर्सेस को सेकंड वे में लंदन फोर्स कहते हैं। सम अथर्स, सम बुक्स में मेंशन है London dispersion forces, but all dispersion forces, London forces or London dispersion forces gives the same information about interaction in between. Now understand, according to London forces, according to London के according to London, forces arise in between two neutral molecules, that is two non-polar molecules, or two neutral atom like inert gases, and one of the neutral molecules and one of the neutral atom. एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो, बात ध्यान से समझिएगा, दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एराइज होता है, और अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एराइज होता है तो हम ये कहते हैं कि दिस इज द डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। या दोनों न्यूट्रल एटम हो, जैसे हीलियम के दो एटम हमने ले लिया, नियान के दो एटम ले लिया, ऑर्गन के ले लिया, तो इस तरह से इनके बीच में नो डाउट कि अट्रैक्शन एराइज होगा। और अगर अट्रैक्शन एराइज हो रहा है तो टेम्पोररी पोलैरिटी डेवलप होगी, उसमें डाइपोल इंड्यूस करेगा, और डाइपोल इंड्यूस करेगा तो वन टू अनदर आर इंटरैक्ट, एक दूसरे के इंटरैक्ट होंगे। आइए इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, नाउ dispersion forces arise due to interaction in between two neutral atom or molecules. Okay, dispersion forces arise due to interaction in between two neutral atom or molecules. In generally one neutral atom,
comes close. One neutral atom comes close to the another neutral atom the negative electron cloud, the negative electron cloud of the one atom interact with nucleus of the another atom, result deformed electron cloud of the both atom instantaneously polarity is erased. Instantaneously polarity arise due to this region attraction also arise. This type of attraction or this type of interaction is very weak. Okay, this type of interaction is very weak, okay, called dispersion force or London force, okay, or London force or London forces. बात ध्यान से समझ लीजिएगा. अभी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ फिगर इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. हाउ टू डिफाइन डिस्पर्जन फोर्स और हाउ टू डिफाइन लंडन फोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमेंबर dispersion force or London force always arise in between the two neutral atom. दो न्यूट्रल एटम जिस पर कोई चार्ज न हो, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज न हो, दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में या वन ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड अनदर वन ऑफ द न्यूट्रल एटम के बीच में, मीन्स मॉलिक्यूल हो या एटम हो, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए.
उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई डाइपोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल होगा। तो इस तरह के अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर जरा से भी इंटरेक्शन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन अराइजिंग बिटवीन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। आइए हम फिगर के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं। ओके, नाउ here one of the helium atom, this is the helium atom. Okay, helium atom, or in place of helium you take neon, you take argon, you take krypton, so on, you take oxygen, you take nitrogen, okay, you take chlorine, so on. Now this is the helium atom. And another one of the molecules, another one of the atom, this is the helium atom second. Okay, helium second atom, helium atom. Now electronic distribution, in both atom are symmetrical. Okay, symmetrical. Electronic distribution in both atom are symmetrical. In case of here, this is the, suppose this is the A and suppose this is the B. You may point out AB or helium atom, both atom helium. Now one to another comes close. आप इसको लाइए, जरा से इसको क्लोज लाइए, और जैसे ही इसको आप क्लोज लाते हैं, अब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, अब वो डिफॉर्म कर जाएगा। और डिफॉर्म करेगा तो किस तरह की कंडीशन मिलेगी, इस चीज को आप ध्यान देंगे कि कैसा पॉइंट आउट होगा। ये कुछ इस तरह का मिलेगा, ये देखिए ऐसे मिलेगा। ओके, नाउ यू विल गेट this type. Now nucleus comes here, or nucleus comes here and electron away from the nucleus due to another force. Here you point out this, and a nucleus comes close to the electron of the another atom. You know, nucleus behaves as a positively charged and electron behaves as a negatively charged. Always in opposite charges attraction appear. Okay, now here deformed electron cloud, helium atom, here helium atom, and another one of the helium atom. Okay, now in this case deformed electron cloud, deformed electron cloud, deformed electron cloud. In between both helium atom, one of the force also arise. One helium atom which interact with another helium atom, one helium atom which interact with another helium atom. Now these type of forces are called dispersion forces or London forces. Okay,
Okay. Try to remember, in between the two neutral atoms, one atom which interact with another atom, that is the interaction energy. You know, or remember, try to remember, interaction energy interaction energy in between the two atom, in between interaction energy in between two atom, is inversely proportional to the 6 power of the distance in between two atom. Now in bracket neutral atom, okay, in between two neutral atom, in between two non-polar atom or molecule, means i.e. this is the interaction energy is directly proportional to 1 upon r ka power 6. Okay, try to remember it. Okay, thank you. Now next heading will be thermal energy. How to define thermal energy? Okay, how to define thermal energy? Thermal energy, लंदन डिस्पर्जन फोर्स बिल्कुल आई होप क्लियर होगा। और अगर किसी तरीके के प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता है समझने में, किसी एग्जाम्पल्स को समझने में, तो बाय व्हाट्सएप या बाय कॉल आप करके पूछ सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट, थर्मल एनर्जी। हाउ टू डिफाइन थर्मल एनर्जी, व्हाट इज थर्मल एनर्जी? ओके, थर्मल एनर्जी which gives a information about free motion of molecules or atom. Now thermal energy, try to write the definition in 2 or 3 lines. Thermal energy, of a molecules. Thermal energy of a molecules depends on temperature.
thermal energy of a molecules depends on temperature. Increase the temperature of the system, increase the temperature, increase the temperature, also increase thermal energy of each molecules. Thermal energy of a molecules depends on temperature. जो भी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी, मे बी पॉसिबल मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन गैसियस फेज, मे बी पॉसिबल मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज, मे बी पॉसिबल मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फेज. आपका ये मॉलिक्यूल्स किसी भी फेज में हो सकता है, लिक्विड हो गैस. थर्मल एनर्जी इस बात का इंफॉर्मेशन देता है कि मॉलिक्यूल्स कितना फ्री है. ओके, thermal energy of a molecules depends on temperature. Increase the temperature, increase the thermal energy. Now here this is the solid, here this is the liquid, here this is the gas. Now solid, liquid, gas, we move from solid to gas. Thermal energy increase. Okay, thermal energy increase if you move solid, liquid, gas. Thermal energy is just like as a kinetic energy of the molecules. Temperature is increased, kinetic energy per each molecules increase. Result, thermal energy increase. ओके, थैंक यू. जो भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप के थ्रू बिल्कुल आप जब भी चाहें पूछ सकते हैं. किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है बाय फोन करके आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट लेक्चर अब नेक्स्ट डेज. थैंक्स.